I am part of BJP, so like everyone else, I'm waiting for the results on June 4th, which we are very sure that अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार. So no two ways about it. We're absolutely excited about that. आप सबको मेरा नमस्कार. बहुत अच्छा लगता है कि इतने सालों बाद मुंबई में इस स्टेज पर हूँ. And I should say thank you to my husband for making a successful film. In fact, ये जो फ्रेंचाइजी है ये तो बिल्कुल पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाना चाहिए. आई एम जस्ट द पर्सन हु साइंस अ चेक एंड दैट्स बिकॉज आई हैव अ ब्लाइंड ट्रस्ट इन हिम. And I think, yeah, this is probably our 20th film in our production house, Avni Cinemax. And fortunately, we have a success rate of 90% when it comes to the filmmaking. And again, the entire credit should go to him क्योंकि वो जो भी कहते हैं ना कि द डर्टी जॉब बिहाइंड द स्क्रीन, वो सारा काम वो करते हैं. तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, शोज होते हैं, कैमरे के सामने होता है, तब मैं आती हूँ. मुझे हॉरर फिल्में देखना बहुत पसंद है और पहली बार मैंने अरनमनई 3 में देखा था कि हॉरर फिल्म कैसे बनती है. तो बहुत ही इतना मुश्किल नहीं है हॉरर फिल्म में एक्ट करना, लेकिन डायरेक्शन बहुत मुश्किल है. एंड आई थिंक द कैपनोवा शिप, सुंदर सी सर इज अ मास्टर ऑफ दैट क्राफ्ट. ही नोज एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स, हाउ ही वांट्स इट. एंड जितने भी आप स्केयर्स देखते हो या जितनी भी आप कॉमेडी देखते हो, बहुत सारे लोग कभी कभी कॉमेडी का ओवरबोर्ड कर देते हैं एक हॉरर फिल्म में, लेकिन आप देखेंगे इस फिल्म में स्पेसिफिकली both are a strength, not one overpowers the other. So I feel it's a perfect horror comedy film. शायद इसीलिए इतने लोग आ रहे हैं देखने के लिए. और इसमें जो हॉरर एलिमेंट भी है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप डर जाओगे या बिकॉज यू आर स्कैर्ड ऑफ हॉरर फिल्म्स यू कांट वॉच इट. यू कैन डेफिनेटली वॉच इट विद योर फैमिलीज. एंड बहुत सारे लोग अपने बच्चों के साथ ये फिल्म देखने आ रहे हैं. तमिलनाडु में स्पेसिफिकली मैंने सुना है कि द रिस्पॉन्स इज अमेजिंग. numbers are already speaking. And मैंने फिल्म देखी है, तो आई कैन ऑल्सो से दैट it is a collaborative effort. More than me and Tamanna, also there are these wonderful comedians we have जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है इस पिक्चर में. तो I think it's always a collaborative effort, and I hope that the Aranmanai series keeps going on and on. That's what I was telling sir. I said आपने बहुत you want a lot of moolah and a lot of respect, and I feel that it keeps going on and on. Tamanna is also fabulous in the film. I've seen it and she's superb. I think for all the Tamanna fans, they should definitely watch this film for sure. Yeah, and all the horror genre fans should watch this film for sure. मैंने बहुत बोला है कि हमारी मीडिया ना बहुत कूल है और हम बहुत मस्ती करते हैं. हमारे प्रेस मीट्स बहुत फन होते हैं. तो आपको पहले ही बता देती हूँ दैट यू गाइस हैव टू आस्क वेरी फन क्वेश्चंस बिकॉज मैंने बहुत बिल्डअप दिया है दोनों को. बहुत मेरे अपने डायरेक्टर को बहुत बिल्डअप दिया है, खुशबू मैम को बहुत बिल्डअप दिया है कि हमें यहाँ पर तो बड़ा मजा आता है. आई लव प्रेस मीट्स बिकॉज द मीडिया इज ऑलवेज सो वार्म, वेलकमिंग. I have the most fun interacting with the media here, and I'm so proud. Thank you for supporting a film that आज हम celebrate कर रहे हैं क्योंकि 100 करोड़ एक फिल्म का कमाना जो female led है with just a South Indian release. I think it is an achievement for us. It really makes us proud and makes us want to share this film with all of you. मैं आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना चाहती हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना खूबसूरत रहा है कि अगर मैं आपको इनके बारे में कुछ बताऊँ नहीं तो इट विल बी इनजस्टिस. सुंदर सी सर के साथ मैंने इसके पहले एक फिल्म में काम किया है. मेरे हिसाब से ये हमारे देश के टॉप 3 डायरेक्टर्स में से है जिनको फ्रॉम टेक्नोलॉजी टू इमोशन टू कमर्शियल फिल्म की सेंस है. एंड ये उन्होंने बार बार साउथ में प्रूव किया है और मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि उनके साथ काम करने का मुझे अपने करियर के अर्ली टाइम में शुरुआत में मुझे मौका मिला. ये फिल्म और उनके बारे में जो मुझे बहुत पसंद है कि हम फीमेल एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं या हम बोलते हैं वी नीड टू मेक मोर फीमेल लेड फिल्म्स. बट मैंने इनको देखा है कि ये घर पे द काइंड ऑफ अपलिफ्टमेंट ही हैड विथ हिज गर्ल्स. ही हैज 2 वंडरफुल girls. He has Khushbu ma'am. They are the perfect family that anyone aspires to have. And ये उनके सिर्फ फैमिली तक सीमित नहीं है, ये ऐसी स्टोरीज बताते हैं जो वो रिलेशनशिप्स को स्क्रीन पे दर्शाती है और आप कहीं ना कहीं अपनी स्टोरीज इन स्टोरीज में देख पाते हैं. एंड आई फील लाइक ही इज ट्रूली, ये प्रतीक है एक्चुअली हाउ टू एम्पावर वुमेन. उसका एक्चुअल प्रतीक है क्योंकि ये सिर्फ घर पे ऐसे नहीं है लेकिन ये बाहर भी उसे बहुत ही प्राउडली एग्जिबिट करते हैं और अपनी फिल्मों में दर्शाते हैं. ये क्लियरली अरनमनई का 4th पार्ट है और 4th पार्ट होने के नाते ये फिल्म ऑफ कोर्स पहले भी बहुत चली है
ये फ्रेंचाइज बहुत चली है, इसीलिए चौथा पार्ट बना पाए हैं ये. सो आई रियली फील वेरी प्राउड कि मैं एक ऐसे फिल्म मेकर के साथ काम कर रही हूँ जिन्होंने हमारा काम इतना आसान कर दिया, क्योंकि इन्होंने मुझे जो कैरेक्टर दिया है, मुझे ऑनेस्टली नहीं लगा था मैं प्ले कर पाऊंगी, क्योंकि मैं अपने घर में अभी भी बच्ची हूँ. I think I still no maternal instincts have kicked in, so I am treated like the baby in the house. And जब उन्होंने मुझे ये स्टोरी सुनाई और बताया कि you're playing a mother who's a protector and who is एक औरत का हर रूप दर्शाने का मौका दिया है इन्होंने इस फिल्म में, और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है, क्योंकि मेरे पास आई फेल्ट इट्स टू प्योर एन इमोशन, मैं इसे कहीं और से नहीं ले सकती, तो आई हैड टू टेक दिस इंस्पिरेशन फ्रॉम माई ओन मदर. एंड मैं घर पे बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड हूँ, मुझे बहुत प्यार मिला है, अभी भी मिलता है, अभी भी मतलब इस उम्र में भी मुझे बच्चे जैसा ही ट्रीट किया जाता है. तो उस फीलिंग को लेके एक माँ कितना अपने बच्चे को कंफर्ट कर सकती है, कितनी भी मुश्किल स्थिति में क्यों ना हो, और अगर वक्त आए जब उसे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना पड़े तो वो किसी भी हद तक जा सकती है. ये इस फिल्म का एक्चुअली सोल है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे डालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर सी सर, बिकॉज अगर आपने मुझे इस रोल के लिए कंसिडर नहीं किया होता तो शायद ये फिल्म कोई और एक्ट्रेस कर रही होती, और ये फिल्म जो भी एक्ट्रेस करती है वो उसके लिए इट वुड बी अ फेदर इन हर कैप. सो आई फील वेरी लकी कि अरण्यमनई 4 का ये किरदार जिसका नाम है सेल्वी, तमिल वर्जन में तो सेल्वी है, वो मुझे करने मिला. And Khushbu ma'am, she is the wind beneath Sundar C sir's wings. She's such a rock solid lady, and I feel so good that I'm working with all these very rock solid people. For me, Rashi is one person who I actually find a lot of love and warmth whenever I meet her, and we've worked together before in a Telugu film. लेकिन I don't know, somehow एक प्रोफेशनल जैसा रिश्ता ही नहीं है. मैं बहुत पसंद करती हूँ राशि को, क्योंकि वो बहुत ही एक सिक्योर एक्ट्रेस हैं, बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं. इस तरह का ठहराव शायद हमारे देश में कुछ एक्ट्रेसेस दे पाती हैं. अब मैंने देखा है फिल्मों में, स्पेशली जब कमर्शियल फिल्म्स होती हैं, there's a lot of हम एटलीस्ट साउथ इंडियन फिल्म में आई हैव नोटिस्ड बीइंग प्लेइंग बबली कैरेक्टर्स, but I've seen Rashi always bring so much subtlety, so much softness, so much realism to her characters. I'm a big fan of Rashi, but I'm a bigger fan of how amazing a person she is and how beautifully she is outside. So yeah, I'm so happy, Rashi, we could do this together. It's a very special film for the both of us. And yeah, this entire journey for me has been extremely, extremely rewarding, because अगर ये फिल्म आज साउथ में इसने अगर 100 करोड़ किया है, इट्स अ ह्यूज वैलिडेशन फॉर एक्टर्स, फीमेल एक्टर्स, कि अगली बार होपफुली फिल्म मेकर्स फीमेल लेड फिल्म्स पे ज़्यादा पैसा खर्चा करेंगे, अलग किस्म के स्टोरीज लेके आएंगे. सो इट्स वेरी वेरी वैलिडेटिंग, और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि ये फिल्म को प्यार मिल रहा है, और अब ये प्यार हम आपसे भी चाहते हैं. इसीलिए हम इस फिल्म को हिंदी में रिलीज कर रहे हैं, ताकि जो पूरा देश है इस फिल्म को सेलिब्रेट कर सके, जैसे साउथ इंडिया ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहा है. और मैं लोखंडवाला की रहने वाली हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पर आके अपनी तमिल फिल्म सबके साथ शेयर कर रही हूँ जो हिंदी में रिलीज होने वाली है. I am very nervous when I'm on stage or holding a mic, and I'm more nervous now because this is the first time I'm being in front of Mumbai media, press, everybody. And excuse me if I make any mistake in my language. Very, very nice to see you in my Aramnai 4 function, because Aramnai 1 was a big hit in South, and it was dubbed in Hindi as Raj Magal, as you know. That movie did so well in OTT and satellite channels. After that, all the South Indian movies which are RR or comedy, they are dubbed in Hindi as RR, Raj Magal 2, 3, 4. Now the line is going on. So I have to wait for Raj Magal franchise number to get. At last, I'm getting my own title for the Hindi dubbed version. So happy. Actually, I was discussing with Tamanna. The main reason for the Aramnai 4 success, one of the main reasons for Aramnai 4 success was when I was doing that movie. The movie was really when the movie was ready for the release. Normally in the South,
they'll have the press show only after the release because they are scared whether the movie will carry good report or not. So always will have the press meet after the release of the movie. And I had only one marketing strategy for my movie, that's Armani 4. I had the press show before the release of the movie. And the only one condition I put forward for my press and media friends down south was they have to come with the family to the theater for the press show. Because I arranged a big theater with more than 1,200 capacity, and all the press and media friends come to the theater with the total family. So when they saw the family laughing and enjoying the movie, automatically I got a very good reviews for the movie. And even before the release of the movie, my movie was declared a super hit success. So that's the power of media and press. So I hope you will also support the movie tomorrow and help it in making it a big success. And to talk about Armani 4, all the three movies before I did in the Armani franchise are all super duper hits actually in the south. Even though the movies are super hit, I didn't do it the next franchise immediately. For the fourth franchise, I took nearly 12 years to make it the fourth movie because I don't want to capitalize on the success or to make the money. Okay, immediately we'll take the Armani, one more Armani, we'll earn money like that. I never went like for that. I always waited for a nice script, nice idea to come. So then only I will touch the Armani franchise because the expectation for Armani in the south was huge. So when I got an idea for this Armani, it will be a little, quite a longer story, please excuse me. Once I was going through some history books, I find it one funny thing. Lot of kings who ruled India, someone like Ashoka or Akbar or Aurangzeb, who ruled most part of the Indias, their borders in the north, in the south and west, it differs. Somebody went till Afghanistan, someone went till Pakistan, like that. Even the south, they came till Hyderabad, someone came till Madurai, like that. But in the eastern side, like a line, nobody crossed Brahmaputra, most of them. As per my knowledge, nobody crossed Brahmaputra. I was curious to find the reason, and historically there were a few reasons for that. There was a big dynasty, they were brave warriors, and a lot of guerrilla warfare was there. So these kings were unable to cross Brahmaputra. These are all historically. And geographically, they said another reason, after Brahmaputra, there is a lot of forest, hills, and a lot of rain. So the kings were unable to cross the border. And I felt there was, because they who were able to cross even the Himalaya borders, they won't find it difficult to cross the Brahmaputra. And also they won so many kings, warriors everywhere, all over India. I don't think it will be difficult for them to cross over the Brahmaputra and conquer them also. And when I was looking through it, there was another fourth reason for that, which was believed by some of the few segments of people there. That was the reason for the king not crossing the Brahmaputra river, it was out of fear of ghost. Because at that time, the land was called as land of possessed by some of the people over Brahmaputra. So the kings were scared to cross Brahmaputra because of the ghost fear. That was believed by some few people or segment of the people. And till today, there was a lot of folklore going up on the telling about the stories of the ghosts there. There are a lot of characters. And one of the interesting folklore was about Bach. I was very curious to read when I read about that Bach. The Bach, they say it's something paranormal thing, lives near the river side, which will eat somebody who comes to the river side and take their shape, and they'll go and bring more people near the river. They'll kill them, take the shape, like that. The story goes on. But that particular character of Bach was very interesting for me. So I took that particular idea of Bach. What will happen? The Bach come alive and come to our south. What will happen? That's the basic line of the story. When I got this idea, I was so interested. Immediately I thought of doing that another franchise for Armani. And now I'm standing in front of you because of that one idea. And it got connected to all over the south. So that's the way Armani 4 started. That's a lot to talk to me. Lot to talk for me. But waiting for your questions. And thanks, Tamana and Rashi, for the nice words. मेरी शुरुआत यहीं से हुई है. पैदाइश परवरिश पूरी मुंबई से हुई है. सो मुंबईची मुलगी मी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट काम था तो चेन्नई गई. वहाँ पे बस मिल गए, वहीं पर अटक गई.
तो एंड बस कहते हैं ना कि कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं कि वो एक भगवान की कृपा होती है, उनकी देन होती है। तो मैं ट्रूली समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मेरे बेटर हाफ सुंदर सर जो हैं वो एक भगवान की देन है, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। क्योंकि कहते हैं कि कहा जाता है बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, बट आई ट्रूली बिलीव बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन हु हैज़ अ बिगर हार्ट, एंड दैट इज डेफिनेटली माय हस्बैंड। तो बहुत अच्छा लगता है कि आज तक मैंने नहीं देखा ज़िंदगी में उन्होंने मुझसे कहा होगा कोई चीज़ ना करें। कहते हैं उनकी ओपिनियन होते हैं, लेकिन कहते हैं कि डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए। एंड जहाँ तक फिल्म का सवाल है, हर वक्त जब मैं बॉम्बे आती हूँ कोई ना कोई पूछता है कि आप हिंदी में क्यों नहीं काम करती हैं, आप इतने साल हिंदी में से क्यों दूर रही हैं। वहाँ पर काम था, फिर शादी, फिर इमीडिएट 2 बच्चे, और मैं बहुत ही हैंड्स ऑन मदर रही हूँ। तो 2 बेटियों को बड़ा करते करते काफ़ी वक्त लगा। बड़ी बेटी ये सितंबर में 24 साल की हो जाएगी और छोटी वाली 21 साल की है। तो बस फैमिली लाइफ में रही, अभी वक्त है, तो अभी शुरुआत होने वाली है, तो देखते हैं। बट बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर एज अ प्रोड्यूसर आप सबके सामने यहाँ पर खड़ी हूँ, तो उसमें बहुत ही एक फ़ख्र महसूस होता है, अच्छा लगता है कि यहाँ से दूर रही लेकिन फिर भी एक कुछ अचीव करके, ज़िंदगी में कुछ हासिल करके, एक मुकाम पर पहुंचकर आप सबके सामने आई हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। It's high time people stop looking at women. I mean, I definitely do not appreciate when they say every time a woman achieves, oh, she is shattering the glass ceiling. I said, why these terms are used only for women? It's because they do not expect women to do well. There's a basic mindset where they feel that women cannot do, there's something which holds them back. But I say you give them a platform to achieve, give them those wings to fly high, and women can do wonders. So what we have seen at Cannes and what we see with Aran Manaipo, with of course Tamanna and Rashi, and we have a very brilliant actor called Kove Sarla. She's a character actor who has done a very major role in the film. I think these 3 women have really taken it forward, and I think all I say is stop looking at women with a very pre-assumed mindset that women cannot achieve. Just let them loose. Give them that free hand. Like you never ask a man, he has achieved something, he's broken, broken the glass ceiling. Nahin. So why those kind of phrases is only for women? Appreciate women. The equality has to start in your minds the minute you understand that women are absolutely equal to men, not physically, but when it come to terms with their professionalism or their talents. I think women are definitely a step ahead of men when it comes to talents. So just let them fly, just let them go free and stop judging them. Even before you know them, most of the people around, they come with this judgment, a very opinionated and lot of judgments about a woman. So I think we need to stop being opinionated about them. We need to stop having our judgments about them and just let them be as they are, and you will see women will be flying high. I actually think of it like at the end, it is every actor's journey as to what they want to do in cinema. And it is literally an actor's choice. I feel it's unfair to always put everything onto an industry or a gender, because these things are generalizations, but I don't think it works like this. Our industry, although it's a small, close-knit one, every actor has his or her freedom to choose what they want to do, what kind of work they want to do. If somebody with their goodwill wants to do something like this, it's really up to them. So I actually don't hold anything against anybody because everyone has a different work journey. Yes, I have done many films in which I thought I wanted to be a part of the film, so I did it. But that was me as an actor making that individual choice. Yes, it's lovely if we could get support, but like Sir said, in today's time and age, I don't think it matters. Like I'm saying it even for my character, had another girl done this film, I think she would have benefited from this film. This merit would have gone to her. So I feel like what matters today is the content actually being that good that it pulls people into theaters regardless of who's in it. And I think that's the only way to go forward. I think that's why also we are making waves as a country internationally also. That's because the work is good. So yeah, that's what I feel about it. Okay, I didn't expect a political question in a filmy theater. But I am part of BJP, so like everyone else,
I'm waiting for the results on June 4th, which we are very sure that ab ki baar 400 par, phir ek baar Modi Sarkar. So there are no two ways about it. We're absolutely excited about that. Apart from my party leader, apart from the highest regards what I have for a prime minister, if you ask me who has been my favorite politician, I would always say it was Dr. Kalaignar, because I started with my political life with Dr. Kalaigner's party when he was the chief minister, and I think I always say, and I always consider him to be my teacher when it comes to the political nuances. I've learned a lot from him, so I have greatest regards, and I always hold him in high esteem. So it has to be, apart from my leader, it has to be Dr. Kalaignar. रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।